Welcome to the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center. In 2004, a national level institute AMGITA has been started in the field of engineering and technology as per guidelines of All India Council for Technical Education AICTE New Delhi. AMGITA is approved by AICTE New Delhi, Gujarat State and affiliated to Gujarat Technological University Ahmedabad, which is also known as GTU. Our goal is to be an institute of generative ideas so that we remain relevant to our society. The AMGITA has always been an organization on move with continuous effort on improving its processes and to maintain its relevance to the Indian science scenario, with adding new programs in its programmatic portfolio. We strongly believe in overall development of students, so for that we provide them a different platform like state level tech fest, project fair, different sports activity, which helps students to teach teamwork and problem solving skills to get physical health benefits, boost self-esteem and reduce pressure and stress for prove their skills in distinct area. Welcome to the lecture of Basic Electronics. Myself, Professor Gaurang C. Patel. Today we are going to discuss regarding the chapter number 2, that is bipolar junction transistor and its biasing. Okay, so in this lecture we are discussing in detail, that is clamping circuit, what are the application of clamping circuit, and in clamping circuit there are two parts that we are going to discuss, that is positive clampers and negative clampers. So let's begin with the clamping circuit or basics of clamping circuits. ओके तो हमने अब तक क्या देखा स्टूडेंट कि भाई फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है डायोड्स एंड इट्स एप्लीकेशंस. तो यस्टरडे वी वर डिस्कस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू योर क्लिपर एंड क्लैम्पर. ओके, हमने ये सारी थियोरी, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, ये सारी थियोरी पढ़ी. ओके, so what is the use of the clippers? That we know that we if we need to remove certain part of signal, then we can use such kind of circuit. पॉजिटिव क्लिपर में हम क्या कर रहे थे कि भाई जो पॉजिटिव पोर्शन है इनपुट सिग्नल का वो चॉप कर रहे थे, वो रिमूव कर रहे थे. नेगेटिव क्लिपर में जो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are starting with the new topic, that is the क्लैम्पर्स. ओके, तो अब तक स्टूडेंट क्या था कि क्लिपर क्या कर रहा था, जो हमारा सिग्नल था एसी साइनोसॉइडल सिग्नल, वो एसी साइनोसॉइडल सिग्नल में जो अगर हमें पॉजिटिव पार्ट उसका नहीं चाहिए तो वो पॉजिटिव कट करके देता था, अगर हमें नेगेटिव पोर्शन नहीं चाहिए तो वो नेगेटिव पार्ट कट करके देता था. ओके, सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ क्लैम्पर ओवर हियर. क्लैम्पर क्या करेगा कि पूरा जो सिग्नल है हमारा, अगर हम पूरे सिग्नल को शिफ्ट करना चाहते हैं डीसी लेवल पे, दैट मीन्स if our input signal is like that, if this is your input signal, that is AC signal having the positive peak and having the negative peak at the input side. Okay, so now what it will do over here, it will shifted your signal फ्रॉम दिस जीरो लेवल. ओके, आप देख रहे हैं कि भाई इनपुट में हमें क्लैम्पर को इस तरह का सिग्नल दिया, एसी साइनोसॉइडल सिग्नल दिया, उससे वो डीसी जीरो लेवल के पूरा ऊपर ले आएगा. ठीक है, नेगेटिव पूरा आपका जीरो हो जाएगा और पॉजिटिव में ये जो है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यानी इट विल गिव यू अ ट्वाइस देन what we are giving at the input side. So that's how the positive clamper is going to be worked. Okay, and this is the arrangement for making the positive clamper to in such a way that it will shifted your signal from zero level to at the positive DC side. Okay, so you can see in the figure there is a battery is connected in series with the source. तो अब क्या होगा भाई, ये जो आपका सोर्स है एसी साइनोसॉइडल सोर्स, तो इनपुट में ही हम उसको शिफ्ट करके पॉजिटिव क्लैम्पर को देंगे. सो whenever it will reach to the load, it will reach to the load in such fashion. Okay, so let's start how it will be work with the theoretical portion. So our clamper, that is the diode clamp, which was discussed in the
previous section that protects sensitive circuit. The clamper is different, so don't confuse in the similar sounding names. A clamper adds a DC voltage to the signal. जो हमने अभी डिस्कस किया कि भाई क्लैम्पर क्या करता है कि आपके सिग्नल, आपका जो सिग्नल है उसमें डीसी वोल्टेज ऐड करता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव क्लैम्पर. वे पॉजिटिव क्लैम्पर क्या है? So this figure shows the basic idea for the positive clamper. When a positive clamper has a sine wave input, it adds a positive DC voltage to the sine wave. Okay. Now यहाँ पे हमने देखा कि this positive clamper has a sinusoidal input and it will add the DC voltage to the positive clamper. So your sine wave is shifted like that. Okay. Now started another way, the positive clamper shifts the AC reference level अप टू अ डीसी लेवल. तो यहाँ पे इसने क्या किया कि आपका जो एसी रेफरेंस लेवल है उसको डीसी लेवल पे उसने कन्वर्ट करके दिया है. ओके, दिस इज योर एसी रेफरेंस लेवल, यू कैन सी. एंड व्हाट इट विल बी डूइंग विद दिस साइन वेव, इट विल बी शिफ्टेड टू द डीसी लेवल. क्योंकि डीसी में क्या होता है, डीसी में वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करता. इट विल ओनली हैविंग वन डायरेक्शन, that is the positive direction. Okay, so that's how it will be work. Okay, now the effect is to have an AC voltage centered on a DC level. This means that each point on the sine wave is shifted upward as shown in the output wave. The figure B shows an equivalent way of visualizing the effect of a positive clamper. Okay, ये figure B जो है वो हमें क्या दिखा रही है कि वो ये कैसे वर्क करता है, हाउ इट विल बी वर्क. उसमें हमने देखा कि सिंपली ये जो साइनोसॉइडल सप्लाई है उसमें हमने ये बैटरी कनेक्ट करके उसको ये उसका लेवल हम शिफ्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल सी what it will say, that is figure 79a. So where is figure 79a? This is the figure 79a. Okay, this is the figure 79, which is the actual you can say actual clamper circuit, which is having one sinusoidal supply and having one capacitor connected with it and one diode is connected in this way across the resistive load. So student, you can see over here the initially what happens, starting में क्या होता है कि कैपेसिटर अनचार्ज होता है. ओके, कैपेसिटर इज नॉट चार्ज. नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी गिव द सप्लाई एट फर्स्ट positive side, capacitor start to be charged, and at the peak of this negative side, this diode is going to be conducted and at the forward bias. So क्या होगा कि आपका जो पॉजिटिव साइड में जब क्लिपर चार्ज होगा, at the same time you will get this portion, and when at the negative side, when it will be diode is going to be forward bias, you will get this portion. So that means you will not reach beyond the zero voltage because you add this charge capacitor as a source for the sinusoidal supply. Okay, how much it will be charged? With the value of plus Vp. So already plus Vp portion is there and capacitor is charged with plus Vp, so total that it will be charged with twice Vp. So that much signal is going to be shifted over here from this zero reference level. Okay, so how it will be worked, that we will be see one by one through this theoretical statements. Okay, so the capacitor is initially uncharged on the first negative half cycle of the input voltage. So initially आपका जो ये कैपेसिटर है वो अब अनचार्ज पोजीशन में रहेगा, वो चार्ज नहीं होगा फर्स्ट हाफ ऑफ द नेगेटिव हाफ साइकिल. ये जो आपका फर्स्ट हाफ है नेगेटिव हाफ साइकिल का, ड्यूरिंग दैट पोर्शन योर कैपेसिटर इज नॉट गोइंग टू बी charged. Okay, it was remain uncharged. Okay, now on the first negative half cycle of input voltage, the diodes turns on. Okay, so this is the figure B. You can see over here figure B how it will be converted from figure A to figure B. You can see at the first half of the negative supply, you can see जब यहाँ से पोर्शन नेगेटिव हाफ साइकिल का स्टार्ट होना शुरू करेगा तब आपका डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा. ओके, तब आपका डायोड कंडक्ट करेगा. तो यहाँ पे आप डायोड जो है कंडक्ट करेगा, इसलिए दिस पोजीशन ऑफ दिस स्विच इज गोइंग टू बी ऑन. ओके, सो इट इज वर्किंग एज अ पोजीशन ऑफ स्विचिंग, दिस इज ऑन एंड दिस सिग्नल इज फेड टू दिस अक्रॉस द RL. सो ये जो पोर्शन है, आप इतना पोर्शन आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये जो कर्सर है, तो
तो इतना पोर्शन अब आपको अक्रॉस द RL यहाँ से मिल रहा है, इतना पोर्शन आपको अक्रॉस द RL यहाँ पे मिल रहा है. ओके, सो नाउ हाउ फर्दर इट विल बी वर्क, वी विल सी दैट. सो the capacitor is initially uncharged, and on the first negative half cycle of input voltage, the diode turns on. Okay. Now, at the negative peak of the AC source, the capacitor has fully charged. अब negative की जब peak आएगी at the negative peak of the AC source. Where is the negative peak of the AC source? So this portion is the negative peak of the AC source. अब यहाँ पे जब इसका नेगेटिव पीक आएगा तब आपका ये जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा. ओके, उसके बिगिनिंग में क्या होता है, बिगिनिंग में क्या होता है कि भाई नेगेटिव पीक जैसे ही आपकी स्टार्ट होती है वैसे ही आपका डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करता है. देन जैसे ही ये मैक्सिमाइज होता है तब क्या होता है कि आपका जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज पोजीशन में आ जाता है. Now we'll see the capacitor is fully charged and its voltage is Vp with the polarity shown. अब कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पे, जब ये फुल्ली चार्ज होगा तब आपका कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो Vp वैल्यू से चार्ज होगा विद द पीक वोल्टेज. Vp दैट मीन्स द पीक वोल्टेज पे आपका जो कैपेसिटर है वो अब यहाँ पे चार्ज हो रहा है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ व्हाट we have to see, slightly beyond the negative peak the diodes shuts off. अब slightly beyond the negative peak, अब जो ये नेगेटिव पीक अब जब आपकी स्टार्ट होगी उससे थोड़ी देर पहले what happen, your diode is going to be turn off. नेगेटिव पीक अगर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ से आपकी नेगेटिव पीक स्टार्ट होती है, देन at this time your diode is going to be turn off. So अब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. ओके, so at that time we will see slightly beyond the negative peak the diode shuts off and the RLC time constant is deliberately made much greater than the period t of the signal. अब जो ये आपका RLC time constant है, that is your R, your C and RLC time constant जो है वो बड़ा रखा, मतलब कि उसका जो टाइम कांस्टेंट आपका जो इसका टाइम कांस्टेंट है किसका, सिग्नल का टाइम कांस्टेंट से इट विल बी ग्रेटर. ओके, व्हाई, बिकॉज इफ वी pick this smaller then we will not find the correct output at the load side. Okay, so that's why our RLC time constant is deliberately made much larger than the period t of the signal. Okay, now we will see what is that time period. That time period is greater, 100 times greater. Okay, your RLC time constant time period, that is the 100 times greater than the your signal time period, that is your period t of the signal. उससे आपका RLC time period कितना है, it is 100 times greater than this period. Okay, now for this reason the capacitor remains almost fully charged. उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कैपेसिटर है वो each and every condition from the beginning it will remains almost fully charged during the off time of the diode. Okay, अब डायोड जब ऑफ होगा तब भी आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा. ओके, so what happened at that time, to the first approximation the capacitor acts like the battery of Vp volts. Now we had seen in that figure, you can see student, so we had seen in that figure at the beginning what is the provision that we are making to happen for the positive clamper. We are connecting the battery at the input side. So now capacitor is just behaving like that. बैटरी में भी क्या होता है कि भाई आपकी बैटरी ऑल टाइम जब आप बैटरी उस पर कनेक्ट करते हैं सो इट विल रिमेन फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज. ओके, उसमें हर टाइम चार्ज मौजूद रहता है, उसका पोटेंशियल हर टाइम उसमें रहता है. ओके, सो सिमिलरली कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक दैट. कैपेसिटर अब यहाँ पे बैटरी की जगह ले रहा है, अब कैपेसिटर भी फुल्ली चार्ज, इट विल रिमेन फुल्ली चार्ज फॉर ऑल द टाइम. सो नाउ what is the work of capacitor? Now it will start to shift your signal at the output side. Okay, so you will see now for this reason the capacitor remains almost fully charged during the
off time during the off time of the diode. To a first approximation, the capacitor acts like a battery of Vp watts. Okay. Now this is why the output voltage in figure 79a is positively clamped signal. उसकी वजह से हमारा जो ये हमें फिगर ए में दिया हुआ है हमारा आउटपुट वोल्टेज वो इस तरह से हमें मिल रहा है, दैट इज प्लस 2 वी पी। ओके, दिस इज प्लस 2 वी पी क्योंकि हाफ ऑफ पोर्शन में क्या आपको सब फेड कर रहे हैं ये साइनोसॉइडल, एंड देन अनदर हाफ ऑफ पोर्शन आपका कैसे इंक्रीज होगा बिकॉज योर कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज विद दिस वैल्यू, सो अक्रॉस द आर एल यू विल गेट this plus Vp plus this plus Vp due to the capacitor fully charged. Okay, so that's how it is going to be the plus 2 Vp at the positive side, and that's how your signal is going to be shifted from the zero level. Okay, so now you can see the idea is similar to the way a half-wave rectifier with a capacitor input filter works. The first quarter cycle charges the capacitor fully, then the capacitor retains almost all of its charge during subsequent cycles, and the small charge that is lost between cycle is replaced by diode conduction. अब उसमें क्या होता है कि भाई आपका जो ये जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा, दैट इज एग्जैक्टली वर्क एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। उस सर्किट में क्या था कैपेसिटर इनपुट फिल्टर में कि जो भी आपका जो गैप होता था कंडक्शन पीरियड का वो जो चार्ज कैपेसिटर है वो फुलफिल करता था। तो यहाँ पे भी क्या करेगा कि आपका जो गैप है जो शिफ्टिंग लेवल है वो कैपेसिटर इंक्रीज करेगा और जो गैप है वो कौन फिलअप करेगा, वहाँ पे स्मॉल चार्ज दैट इज लॉस्ट बिटवीन साइकिल इज रिप्लेस्ड बाय डायोड कंडक्शन। डायोड के जो कंडक्शन है उसके दौरान वो फिल हो जाएगा। ओके, so in figure 79c you can see the charge capacitor looks like a battery with a voltage Vp. This is the DC voltage that is being added to the signal. Okay, and after the first quarter cycle the output voltage is positively clamped sine wave with a reference level of 0, and that is it sits on a level of 0 voltage. Okay, so that's how it will work. You can see this is the DC voltage that is being added to the signal. ये जो डीसी वोल्टेज है वो इस सिग्नल में ऐड हो रहा है। कौन से सिग्नल में, this is the input signal and this DC voltage through the capacitor is added to this signal. Okay, so that's why you can see after the first quarter cycle the output voltage is a positively clamped। पहली आपका जो क्वार्टर साइकिल रहेगा ये आपकी जो पहली क्वार्टर साइकिल रहेगी, ये जो पहले आपकी क्वार्टर साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक जब पहुँचेगी तब क्या होगा यहाँ पे द फर्स्ट ये रहा आपका आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिवली क्लैम्प्ड। ओके, पॉजिटिवली क्लैम्प्ड होगा एंड साइन वेव विद अ रेफरेंस लेवल ऑफ 0 दैट इज it sits on a level of 0 voltage. Okay, now figure 79d shows the circuit as it is usually drawn since the diode drops 0.7 volt when conducting. The capacitor voltage does not quite reach Vp. For this reason the clamping is not perfect and the negative peaks have reference level of 0.7 volt. So in actual practical circuit what happens, you will get slightly voltage at the negative side because we know that our diode is connected in this fashion and it is having the breakdown voltage of 0.7 volt. That's why it will take a time up till to charge the 0.7 volt, because that's why it will appear this 0.7 volt over here, and then after you will get this positive part as in practical circuit. So that's how our practically positive clamper is going to be worked. Okay, now we will see one more, that is the negative clamper. Okay, so student, have you understood, आप पता चल रहा है ना आपको what is positive clamper, what is how it is work, then we Yes, will sir. go. Okay, thank you. So now we will see, okay, then we will discuss now the negative clamper. So पॉजिटिव साइड में हम कैसे पॉजिटिव क्लैम्पर वर्क करता था दैट वी हैड सीन। नेगेटिव क्लैम्पर सिमिलरली we can see just only the difference is, this is the difference what we make in the circuit. We just change the position of our diode. In positive clamper we placed our diode across the RL in that in that direction,
and in the negative clamper we placed our diode in this direction. So what happened, it will shift it from the positive side to the negative side, and similarly the zero point 0.7 voltage we appeared at the practical circuit due to the breakdown voltage of the diode, silicon diode, that is the zero point 0.7 volt. Okay, so what is the theory included in negative clamper that we will just discuss regarding that over here. Okay, now over here you can see what happens if we turn the diode in figure 7090 around. So यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया कि भाई जो अबव फिगर है उसकी जो डायोड को हम डायोड की पोजीशन दैट वी आर गोइंग टू बी रिवर्स्ड. ओके, so we get the negative clamper of figure. As you can see, the capacitor voltage reverses and the circuit becomes a negative clamper. Okay, again the clamping is less than the perfect because the positive peaks have a reference level of 0.7 volt instead of 0 volt. As a memory aid, notice that the diode points in the direction of shift. Okay, now the diode points downward, the same direction as the shift of the sine wave. This tells you that it's a negative clamper, and in figure the diode points of the waveform shifts up and you have positive clampers as well. Okay, so now you able to understood that from this figure. Now if similar work, capacitor position is going to be also changed around over here. Okay, in the positive clamper you can see the negative side. This is the negative side is connected with the sources over here, and this is the positive side that is connected over here. So in that manner, for the negative clamper, the positive side is connected with this side and negative side is connected with this side. So all this direction is going to be changed and you will get the negative clamp output voltage over there in the output side. Now, so the both positive and negative clampers are widely used. For instance, television receivers use a clamper to change the reference level of video signals, and clampers are also used in radar and communication circuits. Okay, student, so in this lecture we will take up to this, and next portion that we will consider in the next lecture session. Okay, so students, finally, as in every lecture, after completion of every lecture I will try to give you a message that please remember turn off the light when it is not required. Okay, so please save the energy, save the electricity. Thank you very much.